invited to the conference, and we can see many of them present here today. A comprehensive agenda has been drawn up for the conference, and here comes Shri Dattu, Honorable Chief Prime Justice Minister of India. Shri Narendra Modi. As he walks in among the guests, greeting the Chief Justices of the High Courts of the state. A personal welcome to the delegates who are present here today. This is the inimitable style of the Prime Minister, where he always makes it a point to make a personal attempt to connect with the people. The Prime Minister moving towards the Chief Ministers who are present here today from all over the country, the various states. This is indeed a very important conference which is expected to come up with definitive outcomes in the form of resolutions for implementation by the judiciary and the state and central governments. The central government has undertaken many initiatives to improve the justice delivery system in the country. The Prime Minister walking towards the dais, and the delegates ready for the conference to begin. And we hand you over to the dais. Good morning, honored guests, dignitaries, ladies and gentlemen. On behalf of the Ministry of Law and Justice, Department of Justice, I'd like to welcome you all to the Conference of Chief Ministers and Chief Justices of High Courts. This joint conference is held periodically to address pressing issues relating to the administration of justice in the country and improving the justice delivery system. This conference is expected to come up with a roadmap of resolutions for implementation by the judiciary as well as the central and state governments. We are very honored on this occasion with the presence of the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, and I request the Secretary Justice, Ms. Kusumjit Sidhu, to welcome him with a bouquet of flowers. I request the Secretary Justice to welcome Shri Dattu, Honorable Chief Justice of India. I request Madam Secretary to welcome Shri V. Sadananda Gowda, Honorable Minister for Law and Justice. And now, a formal welcome speech by Shri D. V. Sadananda Gowda, Honorable Minister for Law and Justice. It is indeed my privilege to be before you all of you in this very important event to welcome you all. It is my pleasure to welcome our Honorable Prime Minister, who stands tall among the leaders, not only in our nation, but among the world leaders, who stands for development and welfare of all. He is a visionary who stands for less and less new legislation, more of good governance, ease of doing business, and legal reforms associated with all are his brainchild.
so that the country achieves faster growth and development with court and social justice. Sir, I extend my warm welcome to you to this important event. It is also my pleasure to extend my welcome with the same warmth to our Honorable Chief Justice of India, who is first among one of the best judicials in the world. Our Chief Justice has taken up a series of reforms in judicial system of our country and who is a common man's judge. I once again extend my warm welcome to our Chief Justice. I also extend warm welcome to judges of Supreme Court who all are quite enthusiastic about today's event to further the cause of justice to all and justice well in time. Indeed, the day belongs to the Chief Ministers and Chief Justices of High Courts, who are the champions of deliberations of the day as well as the ones who will give shape to those thoughts in actual practice. Hence, I am delighted to welcome them to today's event and looking forward for a fruitful interaction throughout the day. I also welcome the secretaries of 3 departments of ministry, officials, and others who have gathered here to make the event this eventful. I also welcome the friends from media. Having welcomed the dignitaries and the participants, let me add few words about today's conference. Such a joint conference was held last 7th April 2013. The clear mandate of the government for development and good governance has heightened expectations of performance from all organs of the state. The conference provides a platform for interaction between 2 vital pillars of the governance, the executive and the judiciary, to work in tandem to ensure timely, effective, affordable to all, justice to all, and suggest ways and means for further strengthening the judicial and legal systems of the country. The Indian judiciary has played an important role in upholding the fundamental rights of the citizens as enshrined in our Constitution. However, ensuring justice to a population over 1.2 billion people is a Herculean task. It is more so in a developing economy with vast geographic, cultural, and socio-economic diversity. This makes it all the more important for state governments and high courts to work jointly towards the effective administration of justice in their respective jurisdictions. The central government supports this process by facilitating administration of justice in the country. Our judicial system is under strain today due to 3 crore cases pending across the courts in the country. Increasing the number of courts and judges at all levels is the first step towards achieving timely delivery of justice. Development of good judicial infrastructure is another priority area. By creating a favorable working environment for judges, lawyers, and litigants, we can make justice more easily accessible to everyone. The central government has been releasing funds for the purpose through a centrally sponsored scheme for infrastructure development and has just completed the first phase of ambitious e-courts project for ICT enablement of courts. I am pleased to report that these initiatives have resulted in availability of more court halls than functioning courts in the country. Another 2,500 court rooms are under construction. The e-courts project has already computerized more than 13,000 district and subordinate courts. Data relating to 4.4 crore cases in these courts are available for lawyers and litigants to access through the district court's website at their convenience. Looking at the positive experiences from these initiatives, I earnestly call upon all the chief ministers and chief justices of high courts to recruit more judges and staff and provide manpower and financial support for maintenance of this ICT infrastructure. I attended the meeting of chairpersons of Computer Committee of High Courts in February when a number of issues were raised regarding the support needed from the state governments. I propose to hold meetings in the coming months for early resolution of these issues. Increase in the number of cases being filed before courts
is in part attributable to the promulgation of a number of new laws. The government is strongly committed to the cause of simplifying legal procedures and has taken steps to remove redundant laws from the statute book. Government has also supported process re-engineering by high courts to simplify procedures. Government has taken many steps to popularize alternate dispute resolution. More than rupees 350 crore has been released under 13th Finance Commission to set up ADR centers and train mediators. About rupees 140 crore has been released for training of judicial officers and another rupees 68 crore for training public prosecutors. We hope to amend the Arbitration and Conciliation Act 1996 soon to make the arbitration process more investor-friendly, cost-effective, and suitable for expeditious disposal of cases. Our goal is to make India a hub of international commercial arbitration. The World Bank Doing Business report has placed India very low on the Ease of Doing Business index. We need to remedy this situation and undertake measures that ensure that the world sees India as a country where transparent and speedy justice is possible. The Law Commission has recently recommended the enactment of an enabling law to be used for the timely and effective resolution of commercial disputes. I have written to all high courts and state governments asking them for their views on the same. I applaud the comprehensive national court management system scheme of Honorable Supreme Court, covering a broad range of issues which are integral to improving the functioning of the judicial system, including the preparation of national framework of court excellence for setting measurable standards for court performance, focusing on issues relating quality, responsiveness, and timeliness, among many other aspects. We look forward to the implementation of the various policy plans formulated by NCMS. In addition, the exercise of process of re-engineering of courts being undertaken with a view towards improving court productivity, improving timeliness, and pursuing automation of court process. Speedy and affordable delivery of justice is the legitimate expectations of the people and the collective responsibility of the different organs of the state. With this in view, and after consultation with the high courts and the state governments, the Department of Justice proposed a substantial grant from the 14th Finance Commission for a slew of measures for the next 5 years. These have been accepted, and item-wise, state-wise allocations have been given in the report. I urge the state governments to take steps to implement these recommendations. With these words, I once again extend warm welcome to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Chief Justice of India Shri H.L. Jattu ji, and all other dignitaries present here for the joint conference. Thank you. Thank you, sir. I now request Shri H.L. Dattu, Honorable Chief Justice of India, to please address the gathering. Good morning. Honorable the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Honorable Union Minister of Law and Justice, Shri D.V. Sadanand Gowda ji, my noble brothers and sister judges sitting on Pharma, the judges of the High Court of Delhi, Honorable Chief Ministers of the states, esteemed Chief Justices of the High Courts and the Law Ministers of the state, Secretary, Ministry of Law and Justice, distinguished members of the legal fraternity, members of print and electronic media, ladies and gentlemen. I'm extremely honored to have been given the opportunity to address this august gathering, especially on this momentous occasion. We have gathered today, the judiciary and the executive, to indulge in the most important act that these two great institutions can share, a dialogue. I hope today's dialogue finds deep and firm roots in the bond of trust,
support, encouragement, and most importantly, faith, which is shared between our institutions. Pandit Jawaharlal Nehru, who during his famous speech delivered on the eve of independence, stated, and I quote, that future is not one of ease or resting, but of incessant striving, so that we might fulfill the pledges we have so often taken and the one we shall take today. The service of India means the service of the millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance, and disease and inequality of opportunity, I unquote. Ladies and gentlemen, we are all well aware of the momentous day in the history of this great nation that took place on 26th of January 1950. It was the day of our sacred constitution came into force. We, the people of India, gave it to our motherland one of its greatest gifts, a promise to secure to all her children justice, liberty, equality, and fraternity. On that historic day, we made a declaration to not only to each woman and man in this nation, but to the whole world, that we are a democracy. I can stand before this impressive gathering and state with absolute confidence and pride that we are indeed the world's largest democracy and perhaps even the greatest. Ladies and gentlemen, the Chief Justice of the State Judiciary and the Chief Ministers of the state have all assembled here with a common purpose. The ultimate goal of all of us is to serve the people of India, upholding the letter and spirit of the Constitution. Our forefathers have defined and declared our common goal within this sacred Constitution. We are bound by constitutional values and principles of democracy, and it is our sacrosanct duty to uphold them. Our sacred Constitution draws its force and its authority from the people of India, but it places the onus and the duty of protecting these citizens on the three pillars of democracy: the legislature, the executive, and the judiciary. Ladies and gentlemen, the legislature, the executive, and the judiciary are the children of a democracy. It is our bounden duty to ensure not only its mere survival, but also to increase its glory. Social evolution, economic progress, and development of the nation raise new challenges and present opportunities for all institutions. Issues concerning the administration of justice are complex and cannot be addressed by the judiciary alone. The executive has just as much at stake, and the judiciary must work with the executive as equal partners in this extremely important mission. It is only a well-coordinated effort between the executive and the judiciary that will ensure that we achieve a just and efficient legal system. I truly believe that our greatest democratic achievement in nearly 7 decades of independence has been the faith the masses of this country have shown in the rule of law. As judges, we are guardians of the rule of law, and the executive has an equally important role in facilitating a rule of law society. But achieving and maintaining a rule of law society is easier said than done. In a country that is socially diverse and economically desperate as ours, ensuring access to effective justice is an Herculean task. However, it is important we consistently engage with this task and constantly evaluate the measures we have designed. While all of us would agree with this overarching constitutional aim of achieving effective access to justice, it is not so easy to find agreement on the measures we must adopt. However, the difficulty in finding agreement must not mean that we do not effectively communicate with each other about what can be done. This conference and the discussion we'll have today is a fine example of institutional dialogue. It is in the highest traditions of democratic governance that two branches of the state
have come together to communicate directly with each other. In a task as complex and important as the one we are concerned with today, it is important that we are open to suggestions, open to change, and open to thinking outside the box. The challenges we face in the administration of justice constantly change and evolve with socio-economic circumstances. As a result, we too must be willing to constantly question the traditional ways of thinking about the challenges we face. We must remember that the framers of our Constitution, the women and men who penned down the voice of our mother, established the Supreme Court of primarily for the purpose of being interpreter and the guardians of the many salutary principles that they enshrined within the Constitution. The initial deliberations of the Assembly in this regard were almost wholly devoted to formulate its role as a constitutional court and the extent of its original jurisdiction. It was only later that the framers turned their attention to the appellate jurisdiction of the Supreme Court. Similarly, the high courts of the states have also been given an essential constitutional role. Every Chief Justice of India has significant opportunities, along with the responsibility and privilege, to shape the administration of justice and access to justice in this country. I do believe that the Chief Justice's conference over the last 2 days and the conference today are significant moments in my tenure, where all of us have the opportunity to collectively define the contours of our justice administration system. Over the course of past 2 days, my noble brothers and the Chief Justices of the High Courts across the country have come together and worked tirelessly as one to mark out the various issues that the judiciary is facing today. These issues find origin in the perception and the desires of our society. On the agenda for the discussion primarily were ways and means to tackle the pendency in the courts, modernization of our legal system, and responding to the current needs of the society. In the deliberations, the issues discussed go to the very heart of the justice administration in the country, which cannot be solved by the judiciary alone, as it requires the active cooperation and the assistance of the executive. The issue of pendency receives a lot of attention in the national press. Only when we closely examine the nature of the problem will we realize its complexity. It requires efforts on multiple fronts from multiple agencies to effectively address this issue. For example, pendency in criminal cases requires judicial reforms just as much as it requires drastic changes in the administration of police, prosecuting agency, prisons, and legal aid. Above all, it requires a tremendous investment in developing appropriate infrastructure for the judiciary, police, prosecution agencies, etc. The Supreme Court and the various high courts have been taking a wide range of measures to address pendency, and this can be in the reduction of pendency in the Supreme Court in the last few months and the effective local adalat measures that have been taken across the nation. To further intensify these efforts, arrears committees are being constituted in every high court to develop a strategy to clear a backlog of cases that is relevant to local contexts. Furthermore, we have been able to address the long pending matters pertaining to land acquisition, direct taxes, criminal cases, service and labor matters, etc. Another point that we discussed in length was the setting up of special courts to deal with cases pertaining to offenses against women, children, and the elderly. There is enough data on record to show that these have been greatly successful in dispensing justice in an effective and timely manner. Another exercise that was believed would facilitate amicable and effective modes of dispute resolution is the strengthening of the judicial academies. Regular training and education of not only judicial officers but also of lawyers is the need of the hour. We need to encourage arbitration, mediation, and conciliation as the genuine modes of dispensation of justice. Further, there have been concerns that highly able and competent lawyers
generally do not venture into the field of the legal aid. It has been suggested that to attract the best minds, it would be necessary to increase the monetary benefits attached to the same. In light of the above, I would also like to mention that the most urgent need is to ensure that the best minds are on the bench. I consider myself extremely fortunate to have such great minds as my sister and brother judges. However, I have a fear for the future. If the youth does not see this judiciary as a financially viable career option, it may choose to stay away from the same. If one were to simply compare the salary and the perks of sitting judges in India to any other modern democracy, or even compare the same to that of a fresh graduates in Indian law firms, the stark reality would be evident. I greatly fear that this would cause the greatest hindrance in attracting the competent youths towards the judiciary. We of course need many more judges at all levels of the judiciary. Our current judge population ratio is 1 is to 61,865, and we must take very serious view of that. That is an unacceptable judge population ratio, and we must attack this on a war footing. However, we also have the paradox of sanctioned posts lying vacant, and we have come to terms with our inability to fill these posts. We can't seek to address this issue by merely sanctioning more posts without providing sufficient infrastructure and support to all these posts. The march of technology is irreversible, and we must be honest enough to admit that judiciary has lagged behind. In a country like ours, we need to be careful about the manner in which we adopt technology. Undoubtedly, there must be a widespread use of technology, but in designing these technological solutions, we must be careful not to exclude sections of our population. The adaptation of technology in various aspects of the judicial structure has transformed the way we function, but we have a much longer journey. For technology to be truly transformative in the judicial sphere, we need to spread the use of technology much more and invest in such a manner that all parts of the country benefit equally. It is important that the state governments take effective financial measures to ensure that the level of computerization and use of technology in courts under their jurisdiction is sufficiently robust. The nature of papers that have been presented by my sister and brother judges over the past few days and the sheer depth in which the topics were discussed has been truly appreciable. The topics have been highly relevant, and the issues were approached keeping the realities of the society in mind. There must be no doubt that the judiciary is best placed to understand its needs and the problem that affects the administration of justice. Therefore, while deciding the budgetary questions, there must be an effective mechanism to factor the inputs of the judiciary. Of course, the final budgetary allocation is the prerogative of the executive. However, once the allocation is made, we all believe that the time has come to seriously engage on the issues of financial autonomy for the judiciary. There must be effective release of funds to the high courts by the respective state governments, and we should look to move beyond a situation where the high courts must repeatedly go to the governments for expenditure that is already budgeted and allocated. Within the allocated budget, the judiciary must have sufficient autonomy to reappropriate expenditure under the decided heads of expenditure. This will go a long way in assisting the judiciary in taking effective steps in developing the judicial infrastructure. If one were to look around today, they would say they see the heads of the judiciary and the states of this great nation. I see a simple gathering of women and men who have been bestowed with the immeasurable privilege of being chosen to work for their country. I see the daughters and sons of this land. We are not here today because we are in some form of employment or because we belong to some political party
or represent some ideology. We are here because we have a calling to serve this country and its people. Each of us represents a different voice, the voice of the state or its judiciary. My hope is that these different voices leave this event as one unified voice, the voice of India. There is a famous idiom stated by William Wordsworth: "The child is the father of man." With this phrase, the poet wishes to convey to the reader that the man is the product of habits and behavior he develops in his childhood. What we think as children will help determine how we think as adults. Another equally important meaning is that all what we do today will influence and affect our children and the generations to follow. Our actions today will mold the way our children perceive things and make an important impact on the mindset of the society. We stand today representing the voice of three pillars of democracy. This voice will serve as a precedent for all future generations. We are at a crucial juncture in the history of this great nation. All our acts are recorded and will serve as a guiding force for the future. Our children are the future. Let us lay down a trail of turbulence. Let us not lay down a trail of turbulence and a turmoil. Our institutions have worked together for the past 65 years. In these 65 years, we have shown to the world the strength and prestige attached to the Indian democracy. No one can refute the fact that our constitution is hailed as the best in the world, that we have been leaders in the evolution of the law, that we have an impressive impact on the world. At this moment, a poem by Robert Frost seems to be more appropriate. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Ladies and gentlemen, the complexities and the needs of Indian society are ever changing. Within our boundaries, we are faced with new problems, with new and innovative ways to address them. In an effective democracy, a solution does not mean the mere removal of a problem. It means addressing the same in tune with the desire of the public and for welfare the maximum. We have to be responsible and responsive. We must be able to feel the pulse of the public, bring just laws, provide good and effective governance, and dispense justice in its wholesome sense. In this, I am reminded of a quote from Joseph Edison, a renowned English essayist, a poet, and a politician. To be perfectly just is an attribute of the divine nature. To be so to the utmost of our abilities is the glory of man. Just laws is what we owe to the women and men of this great nation, and glory is the greatest gift we can give back to our motherland. To borrow a few words from late Justice Krishnaya, I quote, "We are not mere passengers, we are tomorrow's navigators, and in a democracy, each individual has an essential part of the crew." I hope that today we can stand together as one and make that promise to the women and men we serve and to our great motherland, that the words that flow in our preamble shall not remain mere words. They will be upheld not only in letter but in spirit. Social justice, access to justice, elimination of pendency rate before the courts, true justice. These are just a few of the ideals enshrined within our sacred constitution, I unquote. One of the most treasured facets of our culture, from which we have never digressed, is that a child will always hold his mother's words equal to those spoken by the Almighty. Ladies and gentlemen, the judiciary and the parliament are like siblings,
both the children of democracy. We are obligated on one hand to support one another, and on the other hand, correct the other if they sway from the path laid down by our sacred constitution. The perception of the citizens of this great nation is paramount in this regard. The points I have highlighted are part of much larger conversation. It is an institutional conversation that must carry on way beyond those of us currently gathered here. I have no doubt that today's discussion will help us take a significant steps towards achieving a dream that our constitutional drafters held very high. Working towards truly just, effective administration of justice in a country like ours requires tremendous courage, commitment, and creativity. The individuals gathered here today possess all those qualities in a great measure, and I am sure we will not let down the people of this great country. Let us not hesitate in taking these challenges head on, and as Rabindranath Tagore beautifully said, let us not pray to be sheltered from dangers, but to be fearless when facing them. With these words, friends, I wish to thank all of you for your kind attention. I wish and hope that we leave from here with at least the smallest beliefs that we have taken steps in the right direction. I end with a small hope, a hope that the citizens of this beloved country are assured justice to its fullest extent, a hope which can only be achieved through mutual respect and cooperation, a hope that the path to justice is no longer a fight but a matter of right, a hope that the path to justice is no longer a fight but a matter of right. Thank you very much. Thank you, Your Honor. The legal glossary compiled by the Legislative Department of the Ministry of Law and Justice is an important, prestigious reference publication used by honorable judges, professors, advocates, and law students. 6 editions have already been published. The new edition covers the words and expressions used in acts up to the year 2014 and contains about 65,000 entries. I now request Dr. Sanjay Singh, Secretary, Legislative Department, to present the 7th edition of the legal glossary that has been brought out on the occasion to the Prime Minister for release. Thank you, sir. And now, an address by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. मंच पर विराजमान मुख्य न्यायाधीश श्रीमान एच.एल. दत्तू जी, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी विधि एवं न्याय मंत्री श्रीमान सदानंद जी गौड़ा जी, सचिव कुसुमजीत जी, सभी आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हाई कोर्ट के सभी जजेस और सभी वरिष्ठ महानुभाव, मैं इस फोरम से काफ़ी परिचित हूँ, लेकिन पहले मैं वहाँ बैठता था, आज मैं यहाँ बैठा हूँ। और वहाँ जब बैठता था तो एक छोटे कमरे में मुख्यमंत्री और
राज्य हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बीच में एक छोटे फोरम में बैठते थे। मीडिया नहीं होता था, कैमरा नहीं होता था, तो बड़ी खुल कर के बात होती थी। और मेरी भी छवि ऐसी थी कि मैं बहुत ज़रा खुल कर के बोलता था, लेकिन अब शायद मैं इतना बोल पाऊंगा कि नहीं मुझे पता नहीं। लेकिन ये भी मैं मानता हूं कि मैं काफ़ी खुल कर के बोलता था। फिर भी मैं कह सकता हूं कि मैं बहुत कुछ बोलने से डरता था। और शायद यहाँ भी जो मुख्यमंत्री हैं उनके मन में भी ये रहता होगा कि भाई कहे या ना कहे, हमारी कठिनाइयाँ बताएं या न बताएं। और ये स्थिति को मैंने अनुभव किया हुआ है और आज मैं यहाँ बैठा हूँ, तब मैं आवश्यक मानता हूँ कि इन दोनों मुख्य धाराओं के बीच में हमारी संवादिता कैसे बढ़े, खुलापन कैसे आए, एक दूसरे को मजबूती कैसे दें, जो मजबूती भारत की मजबूती के लिए हो। अगर हम इन चीजों को पूरा कर सकते हैं तो हम एक देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। मैं उन विषयों को स्पर्श करना नहीं चाहता हूं जो सामान्य तौर पर इस फोरम में हर बार चर्चा में रहे हैं। ज्यादातर रहा है चर्चा में विषय पेंडेंसी का। सब्रवाल जी साहब थे, लाहौटी साहब थे, बालकृष्ण साहब थे, इन सबके कालखंड में मैं सब सुनता आया हूं और आज भी उसकी चर्चा हो रही है। पूर्व प्रधानमंत्रियों के भाषण देखेंगे तो उसमें भी इस बात का जिक्र है। दूसरा विषय है, हर किसी ने हर फोरम में भ्रष्टाचार के प्रति चिंता जताई है और इसलिए मुझे उसमें अब नया कुछ जोड़ना नहीं है और इसलिए मैं उस विषय को स्पर्श नहीं करता हूं। हर कोई इसकी चिंता कर रहा है, लेकिन अभी तक समाधान हम नहीं ढूंढ पाए हैं। हो सकता है आज के फोरम की मीटिंग के बाद इस मंथन से हो सकता है इन सारी चीजों के भी रास्ते निकलेंगे। लेकिन मुझे हमेशा ये बात ध्यान में आती है कि हम सब एक समान प्रकार के मनुष्य जीव हैं। अलग अलग जिम्मेवारियां हम निभा रहे हैं, अलग अलग कामों को अपनी योग्यता, क्षमता और संजोग के अनुसार हर एक को मिला है। लेकिन जो न्याय क्षेत्र में है उनका वैसा नहीं है। वो भले हर एक के बीच में से आए, हम जैसे लोगों से बीच से आए हैं, लेकिन ईश्वर ने उनको डिवाइन काम के लिए पसंद किया है। आपके पास जो काम है वो एक डिवाइन काम है। आपके पास जो काम है जो ईश्वर आपके माध्यम से करवाना चाहता है, और इसलिए हम लोगों के पास जो काम है और देश के और 125 करोड़ नागरिकों के पास जो काम है उससे आपका काम भिन्न है। और इसलिए आपकी जिम्मेवारियां भी बहुत हैं और देश की आपसे अपेक्षा भी बहुत है। और सामान्य नागरिक की सर्वाधिक अपेक्षाएं हैं, क्योंकि उसको लगता है कि मैं भगवान के पास तो नहीं पहुंच पाता हूं, लेकिन ये एक जगह है कि जहां मेरा कुछ होगा। उसके लिए भगवान के पास नहीं पहुंच पाता हूं तो कहां पहुंचूं, तो वो आपकी तरफ देखता है। और उस अर्थ में कितना बड़ा डिवाइन काम आपके पास है। और मुझे विश्वास है कि आप जहां बैठे हैं वहां हर पल
उसी बात को स्मरण रखते हुए काम करते हैं। और ये भाव किताबों में पढ़ाया गया नहीं है सामान्य नागरिक को। इस इंस्टीट्यूट ने अपने व्यवहार के कारण, अपनी परंपरा के कारण, अपने चरित्र के कारण सामान्य मानवी के मन में ये आस्था पैदा की है। ये आस्था इंजेक्ट की हुई आस्था नहीं है, ये इवॉल्व हुई है। और जब इवॉल्व हुई है आस्था तो उसकी ताकत भी बहुत ज्यादा होती है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि इस महान परंपरा को हम और अधिक उजागर कैसे करें, और अधिक ओजस्वी तेजस्वी कैसे बनाएं, ये हमारा दायित्व है। अभी दत्तू साहब कह रहे थे क्वालिटी मैन पावर के लिए। आज तो हम भाग्यवान हैं कि आज हमारे पास इस क्षेत्र में जो मैन पावर है उसके लिए हम गर्व का अनुभव करते हैं। लेकिन हमारा ये भी दायित्व है कि आने वाली पीढ़ियों में कैसा मैन पावर इस क्षेत्र में आएगा। और इसलिए हमारे जितनी चिंता इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के है, जितनी चिंता डिजिटल फॉर्म में, आधुनिक टेक्नोलॉजी के फॉर्म में अपनी इस व्यवस्था को ढालने की है, उससे अधिक हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि हम आने वाली पीढ़ियों को तैयार करने के लिए, इस फील्ड के लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का हमारा मैकेनिज्म क्या हो। उत्तम से उत्तम ब्रीड लॉ फैकल्टी में कैसे आए, उत्तम से उत्तम ब्रीड जुडिशरी में कैसे जाए। और इसलिए हमारी इस काम के लिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं, राज्य सरकारों की सविशेष जिम्मेवारी है कि हमारी लॉ कॉलेजेज हो, लॉ यूनिवर्सिटीज हो, उसको हम किस प्रकार से समयानुकूल और भविष्य को ध्यान में रख करके कैसे तैयार करें। और जितनी बड़ी मात्रा में हम इस क्षेत्र को बल देंगे, हमारी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई। जब मैं मुख्यमंत्री था, यहां बैठता था सामने, एक बार हमारी एक मीटिंग में विषय आया था, पेंडेंसी की चर्चा हो रही थी। एक हाईकोर्ट जज ने जो रिपोर्टिंग किया वो कम से कम मुझे तो चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा हमारी कोर्ट तो सप्ताह में 2-3 दिन चलती है, और चलती है वो भी 2-3 घंटे चलती है। तो बोले हम पेंडेंसी कहाँ से कर सकते हैं। तो ऐसे ही मेरा मन कर गया कि मैं पूछूं तो सही भाई क्या बात है ये। नहीं, बोले कुछ कारण नहीं है, लेकिन जो बिल्डिंग में हम बैठते हैं उसमें उजाला नहीं है और बिजली आती नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं, हम न्यायपालिका को बार बार पूछते तो है कि भाई पेंडेंसी क्यों है, लेकिन कोई तो सोचो कि बिजली तक अगर मुहैया नहीं है तो फिर वो कोर्ट कितने घंटे चलेगी, कितने दिन चलेगी, न्याय प्रक्रिया बढ़ेगी कैसे। और इसलिए सारी जिम्मेवारियां एक तरफा नहीं है। और फिर कभी ये भी पता चलता है कि बिजली क्यों नहीं है, तो बोले कोई 5 स्टार एक्टिविस्ट कोर्ट में चला गया था तो वो स्टे ले आया था, तो वहां वो खंभा डालना मना है। अब बताइए कहां जाए बात कहां जाकर के रुकती है। और इसलिए हम एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ सभी इकाइयां मिलकर के सही दिशा में एक लक्ष्य निर्धारित करके चलेंगे तो इन चीजों को पार करना कठिन नहीं है। हम चाहते हैं डिजिटल इंडिया, भारत सरकार का एक बहुत बड़ा मिशन प्रोग्राम है। ये डिजिटल इंडिया में मेरा अनुभव भी कहता है, हम जितना जल्दी टेक्नोलॉजी का उपयोग
हमारी न्यायिक व्यवस्थाओं में लाएंगे, हमारी सुविधा बहुत बढ़ेगी, हमारी क्वालिटेटिव चेंज आएगा हमारे काम में। और आवश्यकता है क्वालिटेटिव चेंज की। कोई जमाना था जब कोई रेफरेंस ढूंढना है तो 10 ग्रंथ हाथ लगाने पड़ते थे। आज कोई भी रेफरेंस ढूंढना है, जस्ट गूगल गुरु के पास चले जाओ, 2 मिनट में गुरुजी लेकर के आ जाते हैं। ये सुविधा बढ़ी है। इस सुविधा का लाभ जितना तेजी से हम हमारी न्यायिक व्यवस्था की हर चीजें, पुराने सारे जजमेंट वगैरह, कल मुझे हमारे चंद्रचूड़ साहब मिले थे तो कह रहे थे कि इलाहाबाद में कोई 50 करोड़ पेजेज ऑलरेडी डिजिटल हो चुके हैं। बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम हुआ है। और ये मैं समझता हूं कि जितना तेजी से होगा उतना आने वाले दिनों में इस क्षेत्र को एफिशिएंसी लाने के लिए बहुत काम आने वाला है। कभी कभार ये भी लगता है कि देश को सशक्त न्यायपालिका चाहिए कि समर्थ न्यायपालिका चाहिए, पावरफुल जुडिशरी चाहिए कि परफेक्ट जुडिशरी चाहिए। मैं चाहूंगा कि इस फोरम में बैठे हुए सभी महानुभाव अपने अपने दायरे में चर्चा करें। हम पावरफुल तो होते चले जा रहे हैं। जितनी तेजी से पावरफुल हो रहे हैं, पावरफुल होना गलत नहीं है, लेकिन उतनी ही तेजी से परफेक्ट होना उतना ही अनिवार्य हो गया है। हमारी जुडिशरी पावरफुल भी हो, हमारी जुडिशरी परफेक्ट भी हो, हम सशक्त भी हो, हम समर्थ भी हो। और यह आवश्यकता इसलिए है कि सामान्य मानव के लिए ये एक जगह है। मैं उस बिरादरी से हूं, मैं अपने आप को उस बिरादरी से होने के कारण अपने आप को भाग्यवान मानता हूं। भाग्यवान इसलिए मानता हूं कि हम 2400 घंटे हमारी स्क्रूटिनी होती है। हर पल हमने बायां पैर रखा कि दाहिना पैर रखा, हमारी बिरादरी की बहुत स्क्रूटिनी होती है। और वक्त इतना बदल चुका है कि आज से 10 साल पहले जो खबर गॉसिप कॉलम में भी जगह नहीं लेती थी, वो आज ब्रेकिंग न्यूज बन गई है। इतना अंतर आया है। जिसको कभी गॉसिप कॉलम में भी जगह देने से एडिटर 50 बार सोचता था कि इसको गॉसिप कॉलम में भी रखूं या न रखूं, वो आज ब्रेकिंग न्यूज बन गया है। और हम 2400 घंटे उसकी स्क्रूटिनी हमारी होती है। उस बिरादरी से मैं हूं, मुझे गर्व है। ये स्क्रूटिनी होती है, मुझे उसका गर्व है। और इसके कारण और हर 5 साल के बाद जनता में जाकर के हिसाब भी देना पड़ता है। ये इंस्टीट्यूशन जिस बिरादरी से हम आते हैं उसको काफी बदनामी मिली हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आज कह सकता हूं कि इस बिरादरी ने, उस व्यवस्था ने, शासकीय पंख में बैठे हुए राजनेताओं ने भी अपने पर बंधन लाने के लिए इतनी इंस्टीट्यूशंस को जन्म दिया है। कानून उन्होंने खुद ने बनाए हैं। इलेक्शन कमीशन, उसकी स्वतंत्रता हम पर बंधन डालती है, लेकिन हमने किया है। आरटीआई हम पर बंधन डालती है, हमने किया है। इतना ही नहीं, लोकपाल की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, हम पर बंधन डाल रहा है, हम कर रहे हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि व्यक्ति कितना ही अच्छा क्यों न हो, लेकिन अगर इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क अच्छा नहीं होगा तो गिरावट आने की संभावना कभी भी हो सकती है। और मैं हमेशा मानता हूं कि घर के अंदर मां बाप पैसे लॉक एंड की में रखते हैं। क्या चोर से बचने के लिए? क्या लॉक एंड की चोर के लिए बहुत छोटी चीज होती है,
वो तो पूरी तिजोरी उठा करके ले जा सकता है। माँ बाप घर में लॉक एंड के इसलिए रखते हैं कि बच्चे की आदत खराब ना हो, इसलिए इस व्यवस्था को विकसित करते हैं। हमारे लिए भी आवश्यक है। हम भाग्यवान हैं कि दुनिया हमें देखती है, हमें डांटती है, हमारी आलोचना करती है, हमारी चमड़ी उधेड़ देती है। आपको वो सौभाग्य नहीं है। आपको न कभी आलोचना सुनने को मिलती है, न कोई आपकी, इतना ही नहीं, जिसको सजा हो गई होगी, फांसी पर लटक गया होगा, वो भी बाहर आके बयान देता है कि मुझे न्यायतंत्र में विश्वास है, ऊपर मुझे न्याय मिलेगा। यानी इतनी क्रेडिबिलिटी है इस इंस्टीट्यूशन की। और जब आलोचना असंभव रहती हो, तब इनबिल्ट हमारी अपनी आत्म परीक्षण की व्यवस्थाएं विकसित करने की समय की मांग है। हम उस प्रकार के इनबिल्ट डायनेमिक मैकेनिज्म को डेवलप करें और जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, राजनेताओं का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसी फैकल्टी के लोग, हम वो क्या करें कि आज अगर हम इस व्यवस्थाओं को विकसित नहीं करेंगे, हम इनहेरेंट उस डीएनए को डेवलप नहीं करेंगे, तो जो आस्था जो कि इवॉल्व हुई है, उसको छोटी सी भी चोट आ जाएगी, मैं मानता हूं देश को बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। हम सरकार बनाने वाले लोग एक गलती करेंगे तो गलती ठीक करने की जगह है, और वो जगह आप है। लेकिन अगर आप गलती करेंगे तो फिर तो इसके से सिवा कुछ नहीं बचा है। इसलिए हमें गलती करने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी हम गलती करें तो कोई एक जगह है जहां सुधार हो सकेगा, बच जाएंगे। लेकिन आप गलती करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। और इस अर्थ में मैं डिवाइन पावर के रूप में आपको देखता हूं, और उस डिवाइन पावर के रूप में देखता हूं तब हम सब मिलकर के और हिम्मत के साथ हम मान के चले हमारी आलोचना नहीं होने वाली, तब हमें ही बार बार अपने आप की आलोचना करनी। और ये कठिन काम है, मैं जानता हूं ये कठिन काम है। संविधान के दायरे में, नियमों के दायरे में न्याय देना कठिन नहीं है, क्योंकि आपके लिए 2 मिनट में दूध का दूध, पानी का पानी कार्य करना, ईश्वर दत्त आपको एक शक्ति होती है, एक तीसरी आंख आपके पास होती है, आप चीजों को देख पाते हैं, क्योंकि आपका विकास वैसा हुआ है। लेकिन परसेप्शन और रियलिटी के बीच से खोजने के लिए बड़ी कठिनाई होती है। कभी हमें सोचना होगा कि आज कहीं 5 स्टार एक्टिविस्ट तो हमारी पूरी जुडिशरी को ड्राइव नहीं कर रहे हैं। क्या एक प्रकार का एक हवा खड़ा कर करके जुडिशरी को ड्राइव करने का प्रयास नहीं हो रहा है? संविधान के दायरे में न्याय देना मुश्किल नहीं है, लेकिन परसेप्शन के माहौल में न्याय देना बहुत कठिन काम हो गया है। और इसलिए आज से 15 साल 20 साल पहले जुडिशरी के लिए जो मुक्ति का आनंद था, वो आज नहीं है। वो भी डरता है कि भाई बाहर तो ये चल रहा है और मैं ये करूंगा तो क्या होगा। ये माहौल बन गया है। और तब जाकर के जुडिशरी को जितनी हिम्मत ज्यादा मिले, उसके लिए हर किसी को प्रयास करना पड़ेगा, चाहे वो सरकार में बैठे हुए लोग हो, चाहे मीडिया में बैठे हुए लोग हो, चाहे 5 स्टार एक्टिविस्टों की जमात हो। अगर हम इस इंस्टीट्यूशन को ताकत नहीं देंगे तो हम ही अपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे। और इसलिए मैं मानता हूं कि इन चीजों में बदलाव की आवश्यकता है, और मुझे विश्वास है कि हम बदलाव ला सकते हैं। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, मैं स्वभावतः अच्छी व्यवस्थाओं का पक्षकार हूं। पॉवर्टी इज ए वर्च्यू, इस फिलॉसफी को मैं बिलोंग नहीं करता हूं। वरना हम लोग सदियों से यही पढ़ते आए कि एक बेचारा गरीब ब्राह्मण, वहीं से शुरू होता है कि उसके फटे कपड़े थे, और उसको फिर उसको बड़ा ही तपस्वी, और वो मानने की फैशन नहीं है। वक्त बदल चुका है। उत्तम से उत्तम इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं होना चाहिए, व्यवस्थाएं उत्तम से उत्तम क्यों नहीं होनी चाहिए, और उस दिशा में प्रयास होना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस सरकार में इस बात की प्राथमिकता है। इस बार भी
करीब 9,749 करोड़ रुपीस 14 फाइनेंस कमीशन के कारण सीधे सीधे राज्यों के पास स्पेसिफिकली ईयरमार्क करके जुडिशरी के लिए दिए गए हैं। और मैं राज्यों से आग्रह करूंगा कि वो पैसे कहीं इधर उधर न जाए, न्यायपालिका के काम में जाए, तो अपने आप जो छोटी मोटी समस्या है वो अपने आप सुलझ जाएगी। और मैं आशा करूंगा कि राज्य के मुख्यमंत्री इस बात पर ध्यान देंगे, व्यक्तिगत ध्यान देंगे और ये कैसे हो उसकी चिंता करेंगे। हम लोगों ने आखिरकार कुछ चीजें हैं, मैं तो जिस राज्य से मैं रहा गुजरात में, लोक अदालत का सफल प्रयोग मैंने वहां देखा है। और एक बार मैंने हिसाब लगाया था कि 35 पैसे में न्याय मिलता था, 35 पैसा। मैंने कल फिर रात को खाना खाते समय कुछ जजेस से बात हुई, तो फिर मुझे लगा मैं एक बार वेरीफाई करूं, तो मैंने रात को ही थोड़ा पूछताछ की, तो मुझे पता चला कि 35 पैसे में नहीं मिलता है, लेकिन एवरेज 50-55 रुपये तक में न्याय मिल जाता है, खर्च होता है। मैं समझता हूं भारत जैसे देश में ये व्यवस्था बहुत ताकतवर है। हम देखेंगे इतनी सारी पेंडेंसी है, लेकिन बिलो पॉवर्टी लाइन के फैमिली के केसेस मिनिमम होंगे जी। ये बड़ों लोगों के ही केस होते हैं जी, क्योंकि छोटे लोगों को तो वकील भी कहां मिलता है, वो बेचारा कहां जाएगा। और इसलिए गरीब के लिए जो जगह है वो इन छोटी छोटी व्यवस्थाओं में है। हम अगर इन लोक अदालत टाइप व्यवस्थाओं को जरा बल दें, उसका एक्सपांसन करें, प्रवर्तमान जुडिशरी के लोग, निवृत्त जुडिशरी के लोग, एक ऐसा फ्रेमवर्क हम विस्तृत करें, अगर गरीब से, और मैं देख रहा हूं कि बड़े बड़े मामले भी बैठ करके सॉल्यूशन आ रहा है, सॉल्यूशन आ रहा है। हो सकता है कि हम इस काम को करें तो उसकी चिंता हम लोगों को होगी। एक विषय शायद मेरी एक बार लाहौटी साहब से बात हो रही थी, ऐसे ही बातों बातों में उन्होंने चिंता व्यक्त की थी, और वो इन दिनों जो परिवार टूट रहे हैं, जिस तेजी से परिवार टूट रहे हैं, बड़ी वो चिंता व्यक्त कर रहे थे। बहुत साल पहले की बात है, और ये दौर बढ़ता चला जा रहा है। हो सकता है कि इस प्रकार की संवाद वाली इंस्टीट्यूशन, जितनी फैमिली कोर्ट डेवलप होगी, भारत जैसे देश में परिवार टूटना हमारे लिए बहुत बड़ा कष्टदायक होगा। हम उस पर फोकस करके सामाजिक व्यवस्थाओं को बचाने में कैसे काम कर सकते हैं, इस पर हम संवेदनाओं को ला करके उस चिंता को कैसे बढ़ावा सकते हैं। अगर गरीब को न्याय देने के लिए अगर लोक अदालत है, तो परिवार को न्याय देने के लिए फैमिली अदालत है। खास करके नारी शक्ति के कल्याण के लिए ये व्यवस्था बहुत ताकतवर बनी है। उसको हम और अधिक आधुनिक कैसे बनाएं, और अधिक स्पीडी कैसे बनाएं, और उसमें एक विश्वास बना हुआ है। वहां जाने वाले व्यक्ति को लगता है ठीक है भाई, चलो 2 कदम वो चले 2 कदम मैं चला, लेकिन रास्ता निकल गया, चलो छोड़ो अब नहीं जाना है, अपना काम करो। ये मूड बन रहा है, और मैं मानता हूं इस मूड का और अधिक सार्थक बनने का हमने प्रयास करना चाहिए, और वो प्रयास हम करेंगे तो अवश्य ही लाभ होगा, ऐसा मुझे लगता है। सरकार में भी व्यवस्थाएं विकसित हुई कि भाई हर चीज कोर्ट में चली जाती है, चलो इन बिल्ड कोई अरेंजमेंट करें। उसमें से ट्रिब्यूनल्स पैदा हुई। ट्रिब्यूनल को भी ज़्यादातर लीड करते हैं निवृत्त जजिस। लेकिन मैंने आकर के देखा है जी, मैं बहुत निराश हो गया। शायद आज भारत सरकार में मुझे लगता है करीब करीब 100 ट्रिब्यूनल की ओर हम पहुंच रहे हैं, और एक एक मिनिस्ट्री की 3-3, 4-4 ट्रिब्यूनल बन गई है। और ट्रिब्यूनल का डिस्पोजल तो और चिंताजनक है। मैं चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जन बैठे, मंथन करें कि भाई ये ट्रिब्यूनल नाम की व्यवस्था से सचमुच में प्रक्रियाएं तेज हो रही है, नहीं हो रही है, न्याय मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कि और एक नया बैरियर खड़ा हो रहा है। एक बार देखा जाए इतनी ट्रिब्यूनल की जरूरत है नहीं है, क्योंकि फिर ट्रिब्यूनल है तो बाकी तो बजट वहीं चला जाता है। चाहे ट्रिब्यूनल का बजट कोर्टों को चला जाए तो कोर्ट की ताकत बढ़ जाएगी, इतना बजट ट्रिब्यूनलों में जा रहा है। हो सकता है कि हम इन चीजों को एक बार देखना चाहिए, और तू मैं के रूप में नहीं है, अपनेपन के भाव से, साथ मिलकर के करने के भाव से इसको एक बार देखने की आवश्यकता है। और उसको अगर हम देखेंगे तो मैं मानता हूं कि शायद हम इन व्यवस्थाओं को बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। यहाँ पर काफ़ी चीज़ों का उल्लेख हुआ, इसलिए मैं
उन सारी बातों में नहीं जाता हूं, लेकिन हम जिस महान परंपरा में पले बढ़े हैं, उन महान परंपरा में कानून और न्याय, ये दो मुख्य धाराओं को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, वरना समाज और व्यवस्था चल नहीं सकती। कानून और न्याय दोनों की ओर जाना है, लेकिन अब जगत बदलता जा रहा है। पहले के समय में जितने हम चीजों को हैंडल करते थे, उससे रूप बदल गए। अब क्रिमिनल ऑफेंसेस उसकी तुलना में इकोनॉमिक ऑफेंसेस बढ़ रहे हैं। अब हमारी एक्सपर्टाइज उस ओर जाए, इसे आवश्यकता हो गई है। दुनिया साइबर क्राइम में आ रही है। साइबर क्राइम को कोई सीमा नहीं है, वो ग्लोबल कम्युनिटी है। हमारी अपने कानून के दायरों को हमने उस प्रकार से नई विधा के साथ तैयार करना पड़ेगा। हमारे लोगों को भी उस प्रकार से तैयार करना पड़ेगा। हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, आने वाले दिनों में मैरीटाइम लॉ एक बहुत बड़ा कारण बनने वाला है। मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के इश्यू बनने वाले हैं। यानी बदलते हुए युग में उन नई नई चैलेंजेज, और मैं मानता हूं शायद 20-25 साल के बाद स्पेस रिलेटेड लॉ के भी स्थिति पैदा हो जाएगी। इस स्पेस पर किसका कब्जा है, किसका नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट के दायरे में आ जाएगा। ये दिन आने वाले हैं। इसका मतलब अपने आप को हमें सज्ज करना होगा। आज कानूनी न्याय प्रक्रिया के अंदर फॉरेंसिक साइंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, लेकिन हमारे पास न बार पास के पास न बेंच के पास उसका साइंटिफिक नॉलेज के अभी तक, क्योंकि उस पीढ़ी के समय ये था नहीं। मैंने एक प्रयास जब गुजरात में था, मैंने कहा था जुडिशरी के लोगों को, मैं फॉरेंसिक, हमने गुजरात में एक फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई थी, और दुनिया में एकमात्र फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है वो गुजरात में है। बाकी जगह पर कॉलेज में फॉरेंसिक साइंस के डिपार्टमेंट हुआ करते हैं। तो फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में जुडिशरी के लोगों को हमने रिक्वेस्ट की थी, और गुजरात हाई कोर्ट के जजेज ने मेरी मदद की थी, और करीब करीब सभी डिस्ट्रिक्ट जजेज का फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में 2-2 दिन का कोर्सेज हुआ था। क्योंकि ये एक ऐसा विज्ञान डेवलप हो रहा है जो आने वाले दिनों में जुडिशियल प्रोसेस के अंदर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है। हम उस बात को कैसे ध्यान दें, हम उसमें फॉरेंसिक साइंस की जानकारियों के लिए क्या व्यवस्था करें, तब जाकर के आने वाले दिनों में न्याय की प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी और विज्ञान का भी रोल किस प्रकार से उपयोग में हो, उस पर हमने सोचने की आवश्यकता बनने वाली है। हमारी लॉ यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट के लिए भी ये कैसे हो। एक और समस्या जो हम अनुभव कर रहे हैं, जनता ने हमको चुन करके भेजा है कानून बनाने के लिए, लेकिन हमारा काफी समय और कामों में जाता है। संसद में हम क्या करते हैं वो आपको मालूम है, और अनुभव ये आ रहा है कि जो एक्ट के ड्राफ्टिंग है कानून का, ये सारी पेंडेंसी के मूल में एक वो भी कारण है कि कानून बनाने में, उसकी शब्द रचना में कुछ न कुछ ऐसी कमी रह जाती है कि अल्टीमेटली वो न्यायपालिका के पास जाकर उसके इंटरप्रिटेशन में सालों लग जाते हैं, और तब तक कई निर्णय हो जाते हैं, फिर बेकार हो जाते हैं। जब तक हमारी लॉ यूनिवर्सिटीज वगैरह में ड्राफ्टिंग के लिए हम प्रॉपर मैन पावर तैयार नहीं करेंगे, और कानून बनाने समय ही इस पर हम केयर नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि समस्याएं हमारी बढ़ती जाएगी। कोई हमको ऋषि मुनि तो है नहीं कि एकदम से जीरो डिफेक्ट वाला कानून बना पाएंगे, लेकिन मिनिमम ग्रे एरिया हो वो तो दिशा में प्रयास करें। ये हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, और मैंने अनुभव किया है कि इस प्रकार का मैन पावर हमें उपलब्ध नहीं होता है। आने वाले दिनों में इस काम को कैसे किया जाए, ये एक आवश्यक काम है जिसको कभी न कभी हमें करना होगा, और विशेष करके वो हमारी जिम्मेवारी है। हम इस काम को अगर ठीक से करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कानून जितना अच्छा होगा और संविधान की सारी मर्यादाओं का पालन करते हुए बनेगा, तो मैं नहीं मानता हूं कि कानून के कारण समस्या पैदा हो। दूसरा, हमारे देश में एक ये भी आनंद विषय आ गया बीच में भी, हर चीज के लिए कानून बनाओ, हर चीज के लिए कानून बनाओ। मैं मानता हूं संविधान अपने आप में हर काम करने के लिए बहुत सारी हमारी व्यवस्था देता है, लेकिन एक बन गया है, और मेरे मन में विचार आया है कि मैं कानूनों को खत्म करता चलूं।
इतना बोझ बन गया है जी। मैंने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी में मेरी कोशिश है भी तुम कानून खत्म करो। अभी मैंने 700 कानून खत्म करने के लिए तो कैबिनेट में से अप्रूवल ले लिया, लेकिन अभी मेरे सामने नज़र में करीब 1700 कानून आए, 1700। और मेरा एक सपना था कि मैं पर डे कानून खत्म करूं। हो सकता है 5 साल के मेरे टेन्योर में पर डे कानून खत्म करने का मेरा सपना मैं पूरा करूंगा। ये कानूनों की जंजाल में हमारी पूरी न्यायतंत्र फंसा पड़ा है, और ये जिम्मेवारी एग्जीक्यूटिव्स की है कि वो इसको ठीक से चिंता करें। और मैं तो राज्यों को भी कहूंगा, आपके यहाँ भी एक छोटी छोटी टीम बिठा करके जितने बेफिजूल कानून है उसको निकालिए। जितना सरलीकरण हम लाएंगे, सामान्य मानवी को खुद को समझ आएगा भी ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। और सब व्यक्ति को अगर समझ आता है तो कोई सामान्य नागरिक कानून तोड़ने के स्वभाव का नहीं होता है, वो कानून के साथ चलने के लिए स्वभाव का होता है। लेकिन उसको कानून के साथ चलने के लिए सुविधा पैदा करना ये हम सबका दायित्व है। उन दायित्वों को हम पूरा करेंगे तो हो सकता है जो बोझिल माहौल है, उस बोझिल माहौल में से हम काफी एक मुक्ति का सांस ले सकते हैं। और ये मुक्ति का सांस भी एक नई आस्था को उजागर कर सकता है, नई आस्था को जन्म दे सकता है, और उस दिशा में हमारा प्रयास रहे। यही मेरी मन में कुछ विचार हैं, हम आने वाले दिशा में उसको करें। जहाँ तक राजनीतिक जीवन में बैठे हैं मेरे जैसे लोग हैं, चाहे हम शासन व्यवस्था में हो, हमारा संविधान ने तो हमारे लिए मर्यादाएं तय की हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों ने भी हमारे लिए मर्यादाएं तय की हुई है। अगर हम कहें, अगर हमारी उपनिषद की तरफ नजर करें तो हमारी उपनिषद कहती है क्षत्रस्य क्षत्रम यतः धर्मः, क्षत्रस्य क्षत्रम यतः धर्मस्य। यानी कानून नरेशों का भी सम्राट होता है, राजा का भी राजा होता है। और इसलिए राज्य शासन में बैठा हुआ कितना ही ओजस्वी तेजस्वी व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन कानून उससे बड़ा होता है। इस मूल मंत्र को लेकर के चलना, चाहे हम किसी पद पर बैठे हो तो भी हमारी जिम्मेवारी बनती है, और उसको हम करना पड़ेगा। और महाभारत के अंदर भीष्म ने एक बात कही है, भीष्म ने वो बात कही है, वो शायद समाज जीवन को चलाने के लिए उसकी अपनी एक ताकत है। और महाभारत में भीष्म इस बात का उल्लेख करते हुए कहते हैं, धर्मनैव प्रजाः सर्वा, धर्मनैव प्रजाः सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम। कानून के प्रति सम्मान की भावना रखना ही वह मुख्य शक्ति है जो समाज को एकजुट बना रखती है। देश की एकता और अखंडता के लिए इन मूल मंत्रों जो कि हमें सहस्त्रों वर्षों से प्राप्त हुए हैं, उन संस्कारों को लेकर के हम चलेंगे, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं फिर एक बार आप सबने मुझे आकर के आप सबसे बात करने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ। मुझे विश्वास है, मैं कागजी कार्रवाई थोड़ी कम करने वाला इंसान हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो जो मन में आया मैं बोला है। और मैं नहीं चाहूँगा कि आप उसको जुडिशियल तराजू से देखें, एक सामान्य नागरिक के मन के भाव है उसी प्रकार से देखना, और उसमें से कुछ अच्छा है तो आगे बढ़ाना, नहीं है तो मुझे वापस करना। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. And finally, to propose a vote of thanks, I invite Madam Kusumjit Sidhu, Secretary, Department of Justice. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Honorable the Chief Justice of India, Shri H.L. Dattu ji, Honorable Minister of Law and Justice, Shri D.V. Sadanand Gowda ji, Honorable Chief Ministers of all the states, Honorable Chief Justices of all the High Courts, Honorable Law Ministers, dignitaries, ladies and gentlemen. It is my privilege and duty to propose the vote of thanks. Today's conference, happening after a gap of 2 years, involved meticulous preparation on the part of both the government and the judiciary. It is a matter of great satisfaction that these preparations have now culminated in the launch of the conference. First and foremost, I express my gratitude to the Prime Minister for sparing his valuable time to address the conference today and guiding us with his ideas for improvement in the justice delivery system. His inaugural address has set the tone for a constructive discussion in the working sessions. This conference was possible only due to the blessings and guidance of Honorable the Chief Justice of India. I am extremely grateful for his guidance in setting the agenda
for today's discussion, which I am sure will enable the House to resolve critical issues in the furtherance of the delivery of expeditious and quality justice in India. Honorable Minister of Law and Justice has given a comprehensive overview on the key issues of justice delivery in his welcome address, thus paving the way for informed and focused discussions. I would like to thank him for his support and advice in making this conference possible. The Honorable Minister invited Chief Ministers of all the states to attend this prestigious conference. We are extremely grateful that so many Chief Ministers have taken time out of their busy schedules to accept his invitation and are participating in today's conference. Those Chief Ministers who could not come have deputed their ministers and officials to attend the conference. I thank them all for their participation. I also thank the Lieutenant Governors and Administrators of Union Territories who have come to attend the conference. India has 24 high courts. It is indeed an honor that the Honorable Chief Justice of all the high courts have gathered with us today. We are extremely grateful and encouraged by the full strength of the heads of the state judiciary discussing and addressing similar issues for the last 2 days in the Chief Justices Conference and look forward to their considered views today. The Attorney General, Mr. Mukul Rohtgi, Mr. Ranjit Kumar, Solicitor General, Secretaries to the Government of India, and other senior officers who have taken time to participate in this conference, I thank all of you today, as well as the judges and judicial officers from Delhi who are with us today. The Department of Justice is a very small department in the government with a staff strength of less than 100. This has not come in the way of their resolve to leave no stone unturned, no minor detail unchecked, and no preparatory time missed. The Registry of the Supreme Court has been working shoulder to shoulder with the Department of Justice to ensure the success of this conference. I thank all my colleagues in the Department of Justice and the Registry of the Supreme Court for their contribution. While the Department of Justice and the Supreme Court of India worked hard to bring a comprehensive set of issues before this conference, the logistics and preparatory details required us to reach beyond these stakeholders. In this regard, I wish to thank the Ministry of Home Affairs, the CRPF, the ITDC, Delhi Police, and the staff of the Vigyan Bhavan for ensuring that the deliberations in the conference could be held smoothly. Last but not the least, I wish to thank CPWD for the beautiful flowers on and off the dais to cheer us on this Sunday morning. I also thank Mrs. Sukanya Balakrishnan for her immaculate comparing. In the end, let me thank everyone present here. There may be many whom I have missed naming, but thank you all. I wish you all the best for today's discussion. Thank you. Thank you, Madam. The inaugural session of the Conference of the Chief Ministers and Chief Justices being addressed by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, as he is being escorted off the dais. The discussions will continue through the day as a part of this conference to chart a new roadmap to make the judicial system more efficient and streamlined. But Doordarshan takes you back